नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 14 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए पेपर 2 के लिए. दिस इज मॉक टेस्ट 14 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2. So let's begin. And if you want to solve this mock test yourself, just mute the video and you can solve it yourself. Bioremediation of xenobiotics is like melacion through hydrolysis involves detoxification by A. Removal of water, C. Both removal and addition of water, B. Addition of water, या D. Removal of water. Well, the correct answer is B. Addition of water. Hydro and lysis. The moment a water molecule enters the molecule, it is added to the molecule, it breaks the molecule into at least two parts. तो हाइड्रोलिसिस मतलब होता है हाइड्रो मतलब वाटर का जुड़ना, हाइड्रो, और लाइसिस मतलब होता है मॉलिक्यूल का टूटना. ठीक है, तो पानी जुड़ता है, मॉलिक्यूल टूटता है. आंसर होगा बी, एडिशन ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 2. Assertion: organometals and organometalloids such as trimethyl arsine and dimethyl mercury are more toxic to living systems and more toxic to organisms compared to their inorganic forms. Reason: organometals and organometalloids are more hydrophilic than their inorganic forms and hence they can easily move across lipid bilayer. Clearly, जो पहला statement है, assertion is correct. Organometals and organometalloids are more toxic to living system compared to their inorganic forms because they are more toxic. Yes, but they are toxic because they are hydrophobic. Phobic means to be scared of. So they are scared of water and they are all. So they do not combine with water. They are hydrophobic and not hydrophilic. So this reason R is wrong. They are hydrophobic and that is why they join with lipids and not with water. Okay. So answer will be C. A is true, but R is false. Okay. The most toxic form of arsenic is arsenic 3. ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में हमेशा पूछा जाता है. आर्सेनिक का 3+ जो ये वैलेंसी है, यही मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है. ठीक है. The blue baby syndrome is caused by drinking water pollution from A. ammonia, B. nitrates, C. sulfates, or D. sulfides. Answer is B. nitrates. Blue baby syndrome में actually what happens? The water is contaminated by nitrates. Kids and babies, they drink this water, and because of the nitrates present in the water, this nitrates enters the bloodstream and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. As a result, due to lack of oxygen in the blood, the skin turns bluish, and that is called blue baby syndrome. नाइट्रेट पोल्यूशन से होता है. जब पानी में नाइट्रेट घुला होता है और छोटे बच्चे इस पानी को पीते हैं तो नाइट्रेट ब्लड में घुल जाता है और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है. एज अ रिजल्ट ब्लड जो है वो कम ऑक्सीजन की वजह से स्किन नीली पड़ने लगती है और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं. क्वेश्चन 5 आंसर होगा बी. क्वेश्चन 5. द रेडियोएक्टिव मिनरल अवेलेबल इन इंडियन कोस्टल रीजन इज मोनाजाइट. We all know that monazite is a radioactive mineral. It has got thorium, sometimes uranium, lanthanum, and cerium, and that makes it radioactive. तो मोनाजाइट एक रेडियोएक्टिव मिनरल है. इसमें थोरियम, कभी कभी यूरेनियम, लैंथियम और सीरियम पाया जाता है और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. थोरियम और यूरेनियम रेडियोएक्टिव है और इसकी वजह से मोनाजाइट रेडियोएक्टिव है. आंसर होगा बी. क्वेश्चन 6. थर्मल पोल्यूशन इन कोस्टल रीजन्स इज ड्यू टू. कोस्टल रीजन्स में थर्मल पोल्यूशन क्यों होता है? A. Atomic और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. Yes. B. Thermal पावर प्लांट्स. Yes. क्योंकि इन दोनों पावर प्लांट से गर्म पानी निकलता है. इंडस्ट्रियल प्लांट्स को जरूरी नहीं, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल प्लांट से गर्म पानी नहीं निकलता है, इन्हीं से निकलता है. या टूरिज्म से भी कोई गर्म पानी का कुछ इश्यू नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर होगा बी. A and B आर करेक्ट. सो थर्मल पावर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिकॉज दे emit hot water. Thermal power plants, which is coal-fired thermal power plants, they also emit hot water. Or even if there is oil-fired thermal power plants or diesel generator sets, they also emit hot water. They can emit hot water. So it is mainly because of atomic nuclear power plants and coal-fired thermal power plants. So ये दोनों B and A ये आंसर होगा. Which of the following compounds has the highest bioconcentration factor? BCF. DDT, DDE, chlorodyne, or heptachlor. We all know that DDT has the highest bioconcentration factor. Because it biomagnifies in the food chain. हम सब जानते हैं DDT food chain में biomagnifies होता है और bioconcentration factor होता है उसका सबसे ज्यादा. आंसर होगा 7 का A, DDT. Question 8. Which of the following are natural sinks of carbon? Trees? Yes. Oceans? Yes.
सॉइल्स, जमीन में, मिट्टी में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है बाय माइक्रोब्स एंड प्लांट्स. सो यस, तो डी ऑल ऑफ दीज. आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज डी. Assertion A, ecological restoration is a difficult process both in principle and in practice. सही है, ecological restoration तो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है. Reason R, identity and population sizes of plants and animals once present at a particular site are largely unknown. ये भी सही है, क्योंकि अभी जब इकोलॉजिकल डैमेज हुआ उसके पहले क्या सिस्टम था, क्या प्लांट थे और कितना मात्रा में थे, तो ये पता लगाना तो मुश्किल ही होता है. तो ये रीजन भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है वो ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. क्योंकि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन जो पहले था डैमेज, इकोलॉजिकल डैमेज से पहले वो क्या था पता लगाना मुश्किल है, इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि एनवायरमेंट को लार्जली डैमेज हो चुका है और उस डैमेज एनवायरमेंट में पहले जैसा प्लांट या एनिमल स्पीशीज को रीजनरेट करना मुश्किल होता है. तो आर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है. क्लियरली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, but R doesn't explain A very clearly, because the reason for ecological restoration is a difficult process is because environment has been damaged and it's difficult to get the same soil and climatic conditions back, and that makes it difficult for the previous plant and animal population to thrive in that environment. That is the correct answer and not just this. Okay, so the answer will be B. Both A and R are correct, but R does not explain A. Question 10. Under EI notification on September 2006, no public hearing is needed for which of the following category of projects? आंसर होगा सी, ऑल B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट्स. क्योंकि जो ए कैटेगरी प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको सेंटर में डील किया जाता है, तो उनको डिटेल पब्लिक हियरिंग चाहिए होता है. B1 कैटेगरी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट में डील किया जाता है और उनको भी डिटेल्ड EIA चाहिए होता है. लेकिन जो B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कोई डिटेल्ड EIA नहीं चाहिए होता है और इसलिए कोई पब्लिक हियरिंग भी नहीं चाहिए होता है. सो all A category projects are dealt by central government and they need a detailed EIA and hence they need a public hearing. All B1 category projects also need a detailed EIA and are dealt by the state government and as public hearing is needed. But B2 category projects which are dealt by the state government but do not need a detailed EIA and hence do not need a public hearing. So answer will be C. Question 11. Match the following methods. Network. Now clearly in match the following we do not know the answer to all of this. But even if we know one correct answer, we can crack it. So network method. So we all know that network method is an environmental system as a complex web of relationships. Correct? So A has to be matched with 3, which is that option D. A has to be matched with 3. Overlay method. Special distribution of environmental impacts using GIS. Overlay method is a GIS method. So B has to be matched with 4. And the rest 2 options will automatically be matched. Checklist method, C has to be matched with 2 structured approaches by involving scaling weighing techniques, and ad hoc method, possible impacts by composite environmental parameters. तो जब आंसर विल बी डी. जब भी मैच द फॉलोइंग होता है तो इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, ये सब हमें अच्छी तरह से आंसर नहीं पता, लेकिन अगर हमें कोई एक भी पता, जैसे नेटवर्क मेथड हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल सिस्टम्स एज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप ये होता है, तो अब हम देखेंगे कि ए को 3 से कहाँ मैच किया गया. ऑप्शन डी में ए को 3 से मैच किया गया है. और जो ओवरले मेथड होता है वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स यूजिंग जीआईएस होता है, तो वो हम 4 बी को हम 4 से मैच करेंगे और वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी. बाकी दोनों ऑप्शंस भी सही ही होंगे ये हम मान के चलते हैं, तो आंसर होगा डी. कोई एक भी इसमें से आपको सही से पता है उसको उससे मैच कीजिए और देखिए कि वो मैचिंग किस ऑप्शन में अवेलेबल है. ओके, क्वेश्चन 12. व्हाट डू बेसलाइन स्टडीज डिस्क्राइब इन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में जो बेसलाइन स्टडी होता है उसमें क्या होता है? Collection of demographic data only? No. Prediction of environmental impacts? No. That is always conducted at a later stage. Existing environmental settings of a proposed area, या फिर selection of best project option available. Existing environmental setting of a proposed area. This is what is baseline impact assessment. Baseline study in an impact assessment process. Answer होगा C. तो बेसलाइन स्टडी जो होता है, बेसलाइन मतलब बेसिक स्टडी, उसमें जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल सेटिंग्स हैं उस एरिया की वो ही पता करते हैं. ठीक है. मैच द फॉलोइंग EIA मेथड्स विथ देयर रिस्पेक्टिव फीचर्स. ओवरलेज, अगेन कॉम्पोजिट impact by superimposing maps, environmental systems as a complex web network. तो ओवरले को हम जानते हैं composite impact by superimposing maps. That is correct. Overlay, map overlay technique. It's a GIS technique. So A has to be matched with 4. Let's look at the option. A has to be matched with 4. This is the option. Option D. A is matched with 4. B is matched with 3.
Networks is environmental systems as a complex web. Then Battley Columbus method, ये क्या होता है? C has to be matched with 1. Environmental evaluation system and simulation modeling, D has to be matched with 2. Adaptive environmental assessment, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें ओवरले तो आपको पता है और नेटवर्क्स भी आपको पता है, और बैटले कोलंबस और सिमुलेशन मॉडलिंग अगर आपको नहीं पता है तो इसको देख लीजिए और रट लीजिए. प्लीज डू मेमोराइज दिस आंसर बिकॉज दैट कुड बी आस्क्ड अगेन. Question 14. A company conducted an environmental risk assessment to evaluate the possible impacts of releasing various levels of pollutants from a factory. The environmental risk assessment should focus on, एक कंपनी ने environmental risk assessment कराया कि जो pollutant निकलता है उसकी फैक्ट्री से, उससे क्या possible harmful damage हो सकता है. अब उसका जो environmental risk assessment है उसको किस चीज पर फोकस करना चाहिए, यही क्वेश्चन है. A, it should focus on beneficial aspects of the product produced by the plant. Definitely no, because the risk involved, there's a risk involved, so it should not focus on just the beneficial aspects. The legislative requirements pertaining to human health effects as a result of exposure to the pollutant, कि खाली जो लॉ है उसको पूरा करे उतना ही ध्यान देना चाहिए, वो भी नहीं. The quantification of hazards to local environment from released pollutants, कि local environment को जो hazard होगा उस pollutant के release से, उसके बारे में पता लगाना चाहिए. तो ये ऑप्शन हो सकता है. लेट्स सी कि डी ऑप्शन क्या है. Detailed outline of management process to reduce the health impacts of exposure to pollutants. This is the best option. कि डिटेल आउटलाइन कि अगर ये पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कैसे मैनेज करें कि जो हेल्थ इंपैक्ट हो वो मिनिमल हो, इस पर फोकस करना चाहिए. ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स एन EIA? कौन सा प्रोजेक्ट को EIA चाहिए? कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट नेवर रिक्वायर्स एन EIA. माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, this is the correct option because our community garden project does not require an EIA. Outdoor recreation project usually does not require an EIA. It only requires an EIA in special cases. Development of community wells never requires an EIA. But mining and mineral development projects usually requires an EIA. This is the correct option, B. Okay. Question number 16. Let's go there. Match the following. This is again the match the following thing. So here it is a very difficult question. So I'll show you the answer. The correct answer for this is answer B. ISO 14021, self-declaration of environmental claims. ISO 14022, symbols. ISO 14023, testing and verification methods. And ISO 14024, principles and procedures. और इसको मैं clearly आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने Google किया था. ISO 14020 itself outlines out the general principles. After that, the other standards dive into more depth. ISO 14021, 22, 23. ISO 14021, self-declared labels. ISO 14022 defines the 14020 defines standards for self-declaration environmental claims regarding products and services. तो 21 का मुझे पता है कि क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ISO 14021 has to be matched with 2, which is सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्लेम्स. तो ये अगर आपको मिल गया, 1 और 2 से मैच कर दिए, ऑप्शन बी आंसर है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग अगेन, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग है, टू मेनी मैच द फॉलोइंग, बट इट्स इंपॉर्टेंट, यू शुड नो एवरीथिंग बिकॉज यू नेवर नो व्हाट क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा. लिस्ट 1 इंप्लीमेंटेशन ऑडिट है, प्रेडिक्टिव टेक्निक्स ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, प्रोसीजर ऑडिट है. और लिस्ट 2 है एक्सटर्नल रिव्यू है, इनिशियल एक्टिविटीज है, वैलिडेशन ऑफ इंपैक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशंस एक्टिविटीज है. कि कौन से ऑडिट में क्या किया जाता है, which activity happens in which type of audit. So here ये जो ऑप्शन है, implementation audit is initial activities. Now predictive techniques audit is validation of impact. Performance audit is comprehensive operations activities. Procedure audit is external review. तो performance audit का मुझे पता है, I know what performance audit is. It is a detailed audit for comprehensive operations activities. So C has to be matched with 4. ठीक है, which is option A. C has to be matched with 4. And this is the correct answer. ठीक है, C को मुझे पता है कि 4 होगा. परफॉर्मेंस ऑडिट होता है comprehensive operations activities. तो जो C को यहाँ पे 4 में यहाँ मैच किया गया है, ऑप्शन A आंसर है. Question 18. EIA became an integral part of environment management in India formally in the year 1994. जो पहला EIA नोटिफिकेशन था वो 1994 में आया था और उसी वक्त EIA को फॉर्मली
इंटीग्रल पार्ट बनाया गया एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का. EIA became a formal part, integral part in the environmental management system of India in the year 1994 when the EIA notification, the first EIA notification came out. That is in the year 1994. Answer is D. Why is EIA necessary? Okay. Development is not good for the environment, maybe, but it's not a hard and fast rule. Environmental impacts of development are in public interest. Like environmental impacts of development may or may not be in public interest. There is growing interest in sustainability. This is the correct statement. EIA क्यों जरूरी है? क्योंकि growing interest in sustainability है. Environmental impacts of development are in public interest. ये कोई जरूरी नहीं है. Development is not good for environment. ये भी कोई जरूरी नहीं है. लेकिन C जो है, there is growing interest in sustainability. ये जरूरी है. ये important है. ठीक है? Answer is C. Question 20. According to MOEF and CC notification of 1992 for labeling cosmetics as eco-friendly product, the fluoride concentration in toothpaste should not exceed 20 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 10 ppm. The lowest is 10 ppm. D is the correct answer. Okay. I hope आज जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया हो गया. If you think कुछ भी मैंने गलत बताया है, कुछ कम बताया, ज्यादा बताया है, please do let me in the comments below. Know in the comments below. Also, अगर आप कोई खास वीडियो मुझसे चाहते हैं तो please do let me in the comments below. इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट, 3 लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज और जॉब अपडेट्स के लिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. आई सी यू इन अनदर वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.